Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome back to the channel. Today I will be explaining how to approve a steel rebar supplier in a construction project. अगर आप एक सिविल इंजीनियर हैं या QA/QC इंजीनियर है और आपसे पूछा जाए how to approve a steel rebar supplier, this is more and more important for a civil engineer, QA/QC engineer. हमसे कुछ steps है 1 to 9 we need to discuss briefly. First step, check certification. We need to ensure that the supplier has the necessary quality certifications. Necessary क्या है? ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 and other relevant industry certification. Step 2, review supplier history. Review project history. Check the supplier experience with similar project. Client feedback. Obtain and evaluate feedback from past clients. Performance record. Look the document success or issues in past project. जिस प्रोजेक्ट में काम किया या अभी काम कर रहे हैं और कभी हमें उससे मालूमात करना चाहिए कि ये सप्लायर से आप लोग खुश है कि नहीं, इन लोगों का प्रोडक्ट मटेरियल सही है नहीं है. स्टेप 3, इंस्पेक्ट रीबार सैंपल्स. हमें रीबार्स का जितना भी सैंपल्स है पूरा की पूरा डाया हमें एक एक चेक करना चाहिए. सैंपल कब लेना चाहिए? एट द टाइम ऑफ प्रोसेस. जब वो लोग प्रोसेस कर रहे हैं उसी टाइम पे सैंपल लेना चाहिए. वेरीफाई स्पेसिफिकेशन. फर्स्ट वेरीफाई स्पेसिफिकेशन. चेक ASTM standard STM A615 for rebar grade, size and chemical composition. Inspect samples. Review sample rebar for visual quality and physical properties. 3. Check consistency. Ensure uniform diameter, surface finish and absence of visible defects like crack or rust. 4. Conduct lab test. We need to take a sample and we need to conduct a lab test. Perform tensile strength, yield strength, ductility and chemical composition analysis. Review certification. Verify supplier quality certification and compliance with industry standard. Step 4, testing and compliance. Conduct laboratory tests. Ensure the rebar undergoes mechanical tests like tensile strength, yield strength and elongation. Verify the result comply with the project specification and standards. Inspect what you expect. Measure twice, cut once. Chemical composition. Second, verify the chemical composition of the steel to ensure it meets the required standard or not. हमें कुछ टेस्ट करना चाहिए. टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये जो लगा हुआ है मशीन है इसी पे. यील्ड स्ट्रेंथ, एलोंगेशन और केमिकल कंपोजिशन. ये केमिकल कंपोजिशन ये हमें वेरीफाई करना चाहिए. कुछ रीबार्स जो है ये केमिकल में रखना चाहिए और वो वेरीफाई करना चाहिए कि क्या इफेक्ट है क्या नहीं. स्टेप 5, प्रोडक्शन प्रोसेस एवैल्यूएशन. असेस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज. हमें देखना चाहिए कि सप्लायर्स के साथ सब कुछ बराबर है कि नहीं. Also we need to check a comprehensive plan of the supplier. Assess manufacturing facilities. Inspect the supplier's manufacturing facilities to ensure they have the capacity and technology to produce high quality rebar. सब कुछ है उसके पास कि नहीं. Second, review quality control procedure. Evaluate the supplier's quality control processes including raw material inspection and process checks and final product testing. As a track record. Maintain a track record. Clear documentation and communication is the key of success. First, review mill test certificates. Ensure that the suppliers provide MTCs for each batch of rebar indicating compliance with the required standards. Check traceability. Ensure that the suppliers maintain traceability for the rebar from production to develop with proper documentation. जो लोग जितना माल बेचता है उन लोग के साथ ट्रेसिबिलिटी है. ट्रेसिबिलिटी मीन हमने कब कितना माल भेजा है, इसका एक ट्रेसिबिलिटी फाइल होता है.
ये कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर भी हो सकता है और डॉक्यूमेंटेशन भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। स्टेप 7, inspection and handling procedures. Verify storage condition. Inspect the supplier storage facilities to ensure that the rebar is stored properly protected from corrosion and deformation. हमें उसका स्टोर चेक करना चाहिए कि वो प्रॉपर है कि नहीं, ये उसमें जितना माल पड़ा है उसको तो जंग नहीं लगा हुआ है। Second, check handling and transportation. Review the supplier's procedures for handling and transporting rebar to prevent damage during delivery. At the time of delivery, when we order, example 100-ton rebars, at the time of delivery there is damage and bend all rebars, that is defect quality. We need to ensure that what is the procedure of the suppliers for the delivery and placing. Step 8, safety and environmental compliance. Safety is first. Assess safety standards. Ensure the suppliers adheres to safety regulation and their manufacturing and storage processes. Review environmental practices. Verify that the suppliers follow environmental guidelines such as waste management and pollution control. Safety first. Also, we need to check PPE, personal protective equipment of the suppliers, employees. Step 9, final approval and documentation. Issue a pre-qualification approval. Provide conditional approval based on satisfactory completion of all assessment. Monitor initial deliveries. Closely inspect the first few deliveries from the supplier to ensure consistent quality. We need to check the first, second, 7, 8 to 10 deliveries. It is depend of the suppliers our requirement. हमें 1 से 10 डिलीवरी तक बिल्कुल याद दहानी करना चाहिए कि इन लोगों का जो क्वालिटी है ये मेंटेन है कि नहीं, अप डाउन होता है, हम लोग चेक करना है। मेंटेन रिकॉर्ड। 3, मेंटेन रिकॉर्ड। डॉक्यूमेंट द अप्रूवल प्रोसेस एंड मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल इंस्पेक्शन टेस्ट एंड सर्टिफिकेशन। जितना भी टेस्ट हुआ है उसका रिकॉर्ड जो है ये मेंटेन करना चाहिए। स्टेप 9, टाइप्स ऑफ अप्रूवल। Pre-qualification approval, conditional approval, final approval. We have a lot of approval, but this is the important 3. Pre-qualification approval. Initial assessment to determine if a supplier or contractor meets basic requirement to be considered for a project. हमें जो initial assessment है ये determine करना चाहिए कि सब supplier और contractor जो भी है इसका बेसिक रिक्वायरमेंट जो है ये हमारे प्रोजेक्ट व्हाट इज वांट आवर क्लाइंट इससे थोड़ा बहुत कंसिडर्ड है कि नहीं। सेकंड, कंडीशनल अप्रूवल। सेकंड, कंडीशनल अप्रूवल. Approval is granted with certain conditions or requirements that need to be met within a specified time frame. Final approval. Full and final approval after all conditions and requirements have been satisfied. जब हम satisfied हो जाएगा सब कुछ से, उन लोगों का क्वालिटी से, डॉक्यूमेंटेशन से, सेफ्टी से, एनवायरनमेंट से, सब कुछ से, जितना हमारा रूल्स रेगुलेशन है हमने 1 to 9 स्टेप्स में पढ़ा है, इससे जब हम सेटिस्फाइड हो जाए फिर हमें फाइनल अप्रूवल देगा. नोट: by following these steps you can ensure that the steel rebar supplier meets the necessary quality and compliance standards, minimizing risk and ensuring the integrity of your construction project. Thank you so much. Thanks for watching.